welcome to Millions by Jupiter. My name is Deepansha Dinghra and today we are discussing the most important thing that occupies our lives, the better half of rosy roti, roti aka food. There are two types of people in this world. यानी कि वो जो मेन्यू लेफ्ट से पढ़ना शुरू करते हैं और दूसरे जो ना लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं, बस वेटर से एक सवाल पूछते हैं, सबसे जल्दी क्या मिलेगा? तब तक प्लीज एक प्लेट अचार और प्याज ले आएंगे? Thank you. However, you guys know the most important thing in the menu is the right side column. आखिर में वही डिसाइड करता है कि आपकी डकार बनोफी वाली होगी या हरी चटनी वाली. So obviously your eyes are always looking out for buffet offers, happy hours, delivery app coupon codes. पर कभी सोचा है कि डिलीवरी एप्स में इन्वेस्टर्स के डिस्काउंट कोड से आप कब तक अपनी रसोई चला सकते हो? First, let's look at some of the excuses that we make in order to not cook at home. आजकल वर्क लाइफ को बैलेंस करने के चक्कर में कुकिंग के लिए मुश्किल से ही टाइम बचता है, तो घर जाके कुकिंग करूं या सोऊं? One way to do this is to plan your meals in advance and refrigerate them. On days you don't feel like cooking, just reheat your food. It takes 5 minutes. पर कुकिंग आती किसको है? संजीव कपूर के जीन्स थोड़ी ना है कि 15 मिनट में बना दिया. Just like you're not born a Kohli, you're not born a संजीव कपूर either. कोई भी चीज प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकती है. You can find every single recipe on YouTube now. पहले सिंपल 15 मिनट रेसिपी से शुरू करो और धीरे धीरे लेवल अप करो. You don't have to set the house on fire on the first day. Take your time. अरे इतना लफड़ा चाहिए ही नहीं. 2-2 घंटे बनाने में लग जाते हैं. Netflix ना देख लूं? बाहर से मंगाओ, खाओ, डब्बा फेंको और सो जाओ. किचन भी साफ, मन भी साफ. पर पेट और वॉलेट का क्या? वो भी साफ. पर अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर या फिर रूममेट के साथ शेयर करोगे, इट वोंट सीम लाइक अ बिग टास्क. वर्क डन बाय यू विल बी लेस एंड मोर फन इफ यू शेयर द वर्क एंड द फूड आल्सो. बॉटम लाइन इज कुकिंग इज मोर इकोनॉमिकल. आप भले ही जितने कूपन कोड्स लगा लो, घर पर खाना बनाना हमेशा किफायती होगा. Because when you go out, you are contributing to many operational components of the restaurant like their electricity bill, rent, staff salaries, that you don't have to account for when you cook at home. If you talk about portion sizes at restaurants, you don't have control over it. कुछ restaurants प्लेट भर के नूडल्स देते हैं और आप खा भी जाते हो, और कुछ restaurants हल्क वाले साइज की कटोरियों में एंटमैन जितनी सब्जी देते हैं. फिर आपको जबरदस्ती एक महंगा डिजर्ट खाकर पेट भरना पड़ता है. Plus, you don't know the quality of ingredients they use. याद रखिए, they care about the restaurant's account book's health more than yours. Higher saturated fats, more sodium, low nutritional values, higher calories, sugar and salt in processed and restaurant food can lead to a risk of obesity, diabetes, cholesterol, heart disease and cancer. Not to forget digestive issues. Did you know junk food has even been linked to depression? Not just that. Hygiene की गारंटी कौन लेता है? कस्टमर रिव्यूज में सिर्फ टेस्ट के बारे में लिखा होता है. No one knows what is happening in the kitchen. Fresh out of the tawa or stale out of the fridge, you will never know. Restaurant के dishes Instagram पे डालकर आपको भले ही followers मिल जाएंगे, पर आपकी health आपको unfollow कर जाएगी. थोड़ा maths करके समझाती हूँ. Let's take the staple lunch of India. When I lived for a brief period of time in Delhi, everyone around me had one very clear thought in their head. लंच में तो राजमा चावल ही खाएंगे. Rice fills you and the rajma और पीली दाल gives you the perfect amount of nutrients to carry on with your day. For ₹100, you can get 1 kilogram of any kind of dal in India. Add another $100 and you have bought yourself 1 kilogram of a good quality basmati rice. And that is enough for 7 to 10 meals, or if you count one meal a day, then it can easily last a week for one person. Add some masalas, mirchi, dhania and make it 300. So for $300 a week, you can have this lunch every day and about 30 to 40 rupees per meal. However, the costs increase significantly when you go out or order in the same dal rice. In restaurants outside, the same plate of dal rice costs anywhere between 70 to $100. Multiply it by 7 for a week and you are spending almost $500 to $700 on your weekly lunch. A lunch which you could have made at home for $300. I know 70 rupees per plate doesn't sound like it's too much. But in percentage terms, it works out to a 200% premium. हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर दिन रेस्टोरेंट में 200-250 का लंच भी कर लेते हैं. दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप पायलट जैसे पैसे उड़ा रहे हैं. If you apply the same logic to a fancy dish, even then you will see that restaurants charge you a premium of about 60 to 70% when you order in, and up to 250 to 300% when you eat out. And I'm not even going to talk about 5-star restaurants here. एक famous chef ने कहा है कि they only order items which they normally can't or don't cook.
तो अगर आपको मशरूम पास्ता बनाना नहीं आता, मशरूम पास्ता ऑर्डर कर लीजिए। महीने में थोड़ा इंडल्जेंट होना चलता है। So here is some homemade food for thought. On an average, you would save minimum 50% of the total amount that you spend on eating out or ordering in if you cook those meals at home regularly. और अगर नहीं करना है कुक, नहीं है टाइम, चाहे जो हो जाए आपसे होगा ही नहीं, तो कुक हायर कर लो। I know what most of you are thinking कि हम इतने अमीर नहीं हैं कि पर्सनल कुक हायर कर लें, पर ये एक मिथ है। Hiring a cook even in expensive cities like Mumbai or Bangalore doesn't cost much. And if you are living with a roommate or flatmate, the cost can be further shared between the two of you. तो चाहे जिस भी एंगल से देख लो, जो भी चश्मा लगा लो, घर पे कुकिंग करने या करवाने से पैसे तो बचेंगे ही। अब नया आईफोन लेने के लिए किडनी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस घर का खाना खाकर किडनीज और भी हेल्दी हो जाएंगी। जाते जाते here are some tips that can help you in saving money on food. फोमो के डर से अगर आप हर नए रेस्टोरेंट को विजिट करने की इच्छा रखते हो, let me tell you now, you'll never be able to keep up. Imagine if you had FOMO for every other aspect in life, like movies, TV shows, music, books, sports. ना टाइम होगा, ना पैसा बचेगा। रेस्टोरेंट में अपना बचा हुआ खाना पैक कराने में कोई शर्म नहीं है। You paid for it, it's yours. एक्स्ट्रा प्याज मत मांगना बस, that will be shameless. Different apps have different discounts on different restaurants. So compare your favorite restaurant or all the apps before you place an order. Don't get spoiled for choice. Make a quick decision. विंडो शॉपिंग से पेट नहीं भरता, सिर्फ भूख बढ़ती है। और जाते जाते एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप बाहर खाना खाने को आदत बना लोगे तो ईटिंग आउट वोंट बी अ स्पेशल फीलिंग एनीमोर। बाहर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज कमेंट बिलो विद व्हाट यू वांट अस टू टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।